तो बच्चों, let's read this question. The question says assertion A is given. Assertion A states that alkali metals imparts characteristic flame coloration to the flame. Reason R is also given. Reason R states that alkali metals have low ionization enthalpies and hence their electrons can be excited to higher levels easily. Options are also given. यहाँ पे assertion ए में ये बोला गया है कि अल्काली मेटल्स फ्लेम के प्रेजेंस में एक कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन देते हैं, जिसकी रीजन यहाँ पे ये बोला गया है कि अल्काली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में. नाउ जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है वो है, की कॉन्सेप्ट इज ionization enthalpy of alkali metals. Ionization enthalpy of alkali metals. Now, what do you mean by ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electrons from its valence shell. अब अल्काली मेटल्स क्या है? अल्काली मेटल्स आर द ग्रुप 1 elements of the periodic table. For example, lithium, sodium, potassium, etc. Now, in presence of flame, the alkali metals imparts characteristic flame coloration. For example, lithium imparts crimson red, sodium imparts yellow color, and for potassium it imparts violet color. So the assertion A statement is true. Assertion A is true. Now we know the alkali metals have very low ionization enthalpy. Alkali metals have low ionization enthalpy. इसका मतलब ये है कि अल्काली मेटल्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, जिसके वजह से द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द electrons from its valence shell is very low. So therefore alkali metals have low ionization enthalpy. तो क्या होता है जब फ्लेम के प्रेजेंस में अल्काली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, इट गेट एक्साइटेड टू higher state electron, that is excited state. Now when it reaches excited state, then again it falls back to ground state, imparting a radiation impart करते हैं जो कि whose wavelength falls under visible range. We know the visible range is between 380 nanometer to 700 nanometer. Now in presence of flame, the ground state electron gets excited state, then it falls back to the ground state, imparting radiation whose wavelength falls under visible range. Therefore we saw color in presence of flame. It means that the reason R that is given is also true. So the option A is the correct option, which states that both A and R are true and R is the correct explanation of A. The correct option will be A. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.